हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू आवर थर्ड वीडियो इन द नीट सीरीज़ फ्रॉम क्लैविमेट। सो जैसा कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो, आज के वीडियो का टॉपिक है नीट यूजी 2023 में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है उसका वेटेज को प्रिडिक्ट करना। सो आज हम क्लास 11 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कमिंग वीडियोज़ में क्लास 12 के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक में डायरेक्टली जाने से पहले आई वांट टू क्लैरिफाई वेयर आई हैव गॉटन दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम. So I have gathered this information by first of all observing the trends in the previous years papers, as well as I have gathered information from certain expert sources. So जिस article का मैंने help लिया है उस article का link मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, and if you wish to you can go and check out the article yourself. बहुत ही अच्छा article है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट आज के वीडियो का जो भी कंटेंट्स है प्लीज़ यूज़ इट एज अ गाइड, एंड कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है कि द वे वी आर प्रेडिक्टिंग इट नाउ वैसा ही आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ नेशनल वाइड competitive exam which we are not setting. So this is a guide which is based on the previous trends and other opinions of experts. But to make your life even easier, what I have done is that मैंने कुछ chapters के against एक red star लगाया हुआ है. These chapters indicates the must do topics जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. And I will be explaining why it's must do as well in the course of this video. So first of all हम physics के बारे में discuss करते हैं, class 11 topics. As you can see मैंने आपके सारे class 11 topics का list बनाया हुआ है इधर. And साथ ही साथ some chapters are marked with a red star. Now before we directly move into the topic, I want to explain the layout to you. So आपके physics exam में you will have a total of 50 questions in the form of 35 compulsory questions in section A and 15 questions in section B, जिसमें से आपको 10 attempt करने हैं. So total आपको 45 out of 50 questions attempt करने हैं. So जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि चैप्टर नेम, परसेंटेज, वेटेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिस्टेड है. सो ये परसेंटेज क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज आउट ऑफ 50 which will be in your NEET exam. So now that that's out of the way, let's get into the names of the chapters. So first you must understand कि हर एक चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आने वाला है. सो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है. सो इन दैट वे एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज even one question which you get correct is a +4 to your score, and in a competitive exam 4 मार्क्स का डिफरेंस आपका रैंक 5000 से भी ज़्यादा जंप कर सकता है. लेकिन आज के वीडियो में जो चैप्टर्स रेड स्टार से मार्क्ड है, दोज आर द चैप्टर्स जहाँ से जनरली 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, विच मीन्स दैट अगर आप इन चैप्टर को पूरा पढ़े एंड यू गेट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स करेक्ट, यू कैन गेट a +8 to a +20 in your score. That is the basis on which I have marked certain chapters with a red star. But realistically speaking, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है which is at least 4 marks. So you must attempt to do all. But red stars जो chapters है, those are absolutely must do. There is no way you must go to the exam without completing at least this much. So first of all, laws of motion. So we are expecting around 2 questions in your 2023 paper, and आपके 2022 paper में there were 3 questions also from laws of motion. वर्क एनर्जी पार्ट से वी आर एक्सपेक्टिंग 2 questions in your paper, and इस साल के पेपर में, तो 2022 के पेपर में से 2 questions वर्क एनर्जी पार्ट से थे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन से वी आर एक्सपेक्टिंग 2 to 3 questions, and इस साल there were 2 questions from rotational motion. ग्रेविटेशन इज़ क्वाइट एन ईजी चैप्टर, और इधर से वी आर एक्सपेक्टिंग 1 to 2 questions, और इस साल के पेपर में भी 2 questions थे फ्रॉम ग्रेविटेशन. देन टू थर्मोडायनामिक्स, यू कैन ऑलरेडी सी इसमें बहुत वेटेज है, 4 से 5 questions वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड 2022 पेपर में 3 questions आए थे फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स. देन ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये बहुत ही स्कोरिंग एंड सिंपल सेगमेंट है, इसलिए वी आर रिकमेंडिंग ऑल स्टूडेंट्स टू डू दिस. इधर से वी आर एक्सपेक्टिंग 1 to 2 questions, एंड आपके 2022 पेपर में भी इधर से 3 questions हैड कम. सो एज यू कैन सी जो रेड स्टार चैप्टर्स है, इधर से 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच मेक्स इट हाई वेटेज इन योर नीट एग्जाम. सो आई विल कीप दिस स्लाइड फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर फर्दर रेफरेंस. Moving on to chemistry. So again, as you can see, it's the same layout as physics. मैंने आपके सारे chemistry class 11 के chapters list किए हुए हैं इधर, and साथ में कुछ chapters red stars से marked है. So the chapters marked in red are structure of atom. So इधर से we are expecting only 1 question, and 2022 पेपर में भी एक ही question आया था. तो आप सोच रहे होंगे क्यों ये रेड स्टार है. द रीज़न फॉर इट बीइंग रेड स्टार
is that structure of atom is the most basic chapter in class 11 and all of chemistry. So although directly आप structure of atom से एक ही questions, एक या दो questions ही maximum आएंगे directly, but from the knowledge of this chapter you can solve more than one question. बहुत सारे questions आपके इस knowledge से solve हो जाएगा, इसलिए we have marked it as red because ये बहुत ही important basic chapter है. Then the next important chapter marked is chemical bonding and molecular structure, जिससे हम 2 से 3 questions expect कर रहे हैं. And 2022 में we had a huge number, 4 questions from chemical bonding alone. Then the next important chapter marked is equilibrium, जिधर से हम दो questions expect कर रहे हैं और आपके 2022 पेपर में 3 questions आए थे from equilibrium. Then in your class 11 both organic as well as inorganic is very important. So inorganic में आपका hydrogen S block and P block रहता है, जिधर से हम total 5 to 6 questions expect कर रहे हैं. And आपके 2022 पेपर में भी you had 5 questions from these 3 chapters. Then for your organic chemistry part आपका रहता है GOC and hydrocarbons, इधर से हम 4 से 5 questions expect कर रहे हैं in your 2023 पेपर. And इस साल के पेपर में भी आपका 4 questions था organic chemistry of class 11 से, 2 questions from GOC and 2 questions from hydrocarbons. I'll just keep this for a couple of seconds for you to take a picture and take it in before we move on to the next part. Chemistry में भी the same rule applies in the sense that हर chapter से at least one question is going to come, लेकिन जो chapters red starred है वो उन chapter से 2 या उससे ज़्यादा questions आते हैं. So every chapter that you do, which you ideally should do, is a +4 to your score. So of course try to complete all chapters without any selectivity. Now moving on to your biology part. So as you can see, I've listed down 4 units which are there in biology, and 5th unit is on the next slide due to lack of space. So I will first clarify what the numbers are. So chapter name, percentage weightage and number of questions. आपके NEET exam में biology is divided into 2 segments, botany and zoology. For botany and zoology, each you will have 35 compulsory questions as a part of section A and 15 questions as a part of section B, जिसमें से आपको 10 attempt करने हैं. मतलब botany से आपको 45 attempt करने हैं and zoology में आपको 45 attempt करने हैं out of 50 each. So total botany and zoology मिला के in all of biology you will have 100 questions. That is why percentage weightage and number of questions that I mentioned on this slide is out of 100. So after clarifying the numbers, let's get into the units. So आप देख रहे हो कि आपके 4 chapters, 4 units जो है उसमें से मैंने 3 को red star किया है. So now a lot of you are probably complaining that this is almost everything. How is this selective at all? I have to correct you here to tell you that biology should be your strongest point because NEET is an exam to get into medical sciences. So biology should be your stronghold and it must also be the most interesting subject to you. बिकॉज अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर बायोलॉजी के बेसिस पे ही आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ यू हैव टू डील. ओके, सो यूनिट 1 इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ये 4 चैप्टर्स है जहाँ से हम 14 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड इन योर दिस ईयर का पेपर विच इज़ 2022 यू गॉट 11 क्वेश्चंस. सो एज यू कैन सी बस 4 चैप्टर से वी आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी, सो इट्स 2 to 3 questions per chapter which is quite big. Then moving on to unit 3 which has cell, the unit of life, biomolecule, cell cycle and cell division. So इधर से हम 9 से 10 questions expect कर रहे हैं आपके पेपर में और 2022 में भी 8 questions आए थे. So on an average you're getting 3 questions per chapter in this unit. Then moving on to unit 4, there is plant physiology जो classically बहुत important है for NEET and most of you know this. So there are a total of 5 chapters जहाँ से हम, and in your 2022 paper there were 13 questions from plant physiology alone. Now as for unit 2 which is regarding the morphology and anatomy of plants, there are 3 chapters जहाँ से हम 5 to 6 questions expect कर रहे हैं. It's an important segment but I have not marked it with a red star because it is quite a big segment जहाँ से 5 questions are comparatively less, but of course if you are able to attempt 5 questions that's plus 20 to your score and that's a very big jump. So technically you should of course do unit 2 as well, लेकिन मैंने red star से mark नहीं किया है just because it is comparatively smaller number of questions, but it is still important. Now moving on to unit 5, ये आप लोगों का सबसे favorite unit है और at least it should be considering you want to get into MBBS or other medical sciences courses.
So इसमें you have 7 chapters on the human body, और इधर से we are expecting around 15, 16 questions in your 2023 paper, and in fact in your 2022 paper you had 13 questions from human physiology. So जैसे कि आप देख रहे हैं हर चैप्टर से 2 questions are coming from human physiology. So ये segment भी आपको properly करना है. So now a very important thing that a lot of students ask, ma'am, should we do class 11 or should we do class 12? What should we focus on? So the answer to that is 11 और 12 में 50-50 division है और दोनों classes से ही एकदम 50-50 करके ही questions आएंगे. If you just go back and go through the slides that I've just shown you and you calculate the total number of questions, you will see it's just 50% of the total number that comes in NEET. मतलब 50% आपको 11 से आएगा और 50% आपका 12 से आएगा. So you must do both. Try to complete all. I have already discussed this with you in the sense that हर chapter से 1 question तो आने ही वाले हैं. So try to complete as many as you can. But जो red star से है वो must do है because उसमें से सबसे ज़्यादा questions आ रहे हैं. In तीनों point, these 3 points I have discussed in detail in our previous 2 videos in the NEET series. इसमें I have completely discussed regarding आपको कैसे chapter wise MCQ solve करना है and how you can solve it, where you can solve it and how to manage your time, and including how to divide your time between NEET and board. So please go through the previous 2 videos in the NEET series to understand how you can manage your time to solve MCQs of these 96 chapters which are there in your NEET exam. And of course, last but not the least, if you have any questions or any doubts from this video or from our previous videos or any of the videos unrelated to any of the videos released, then please let us know in the comment section down below so that it may help us address your issues in a more streamlined and more direct fashion. And do not hesitate at all. And that's it for today. Thank you. Good luck and happy studying.